शरीरं मे विदर्शनम् जिह्वाये मधुमत्तमा करणाभ्यां विश्वम् ब्रह्मणामोरोऽसि दयातीतः कृतं मे गोपाय। ओम शांति शांति शांति। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा, श्री ज्ञानोबराय, जगद्गुरु तुकाराम महाराज, शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु के कारण करुण ऐसी कृपा से ब्रह्म सूत्र से अस्माकं विचार प्रचलन अस्ति। ब्रह्म सूत्रे तृतीय अध्याय से तृतीय पाद से षड्विंशति अधिकरणानि अभवन्। इदानीं सप्तविंशति अधिकरणस्य विचारः प्रचलिष्यते। पश्यन्तु अग्रे आदौ ओम इत्येतदक्षरम् उद्गीतमुपासीत इति अस्य अधिकरणस्य विषयः वर्तते। एतद्विषयम् आदाय पूर्वपक्षी उत्तरपक्षिणः अत्र दृश्यन्ते। पश्यन्तु नित्याङ्गावयवबद्धस्यो कर्मस्वनियता उत वर्णवत्क्रतु सम्बन्धो वाक्यान्नित्यास्ततो मताः। पृथक् फल श्रुतेर्नयिता गो नित्या गो दोहनादिवत् उभौ कुरुत इत्युक्तम् कर्मोपास्यनुपासिनो। देखिए इसमें विचार कहते हैं कि ये जो वही इसमें तो उसमें भी बहुत छोटा दिखता है। नित्य अंगावयवबद्धस्य कर्मस्वनियता उत। कर्म में अंग रूप से आश्रित उपासनाएं ये क्या नित्य है, अर्थात नित्य निरंतर अनुष्ठान करने चाहिए, अथवा कर्मों में अनियत है, की तो भी चलती और नहीं की तो भी चलती है। पूर्व पक्ष कहता है पर्णवत क्रतु संबंधो, पर्णता के समान ऋतु के साथ जैसे क्रतु के साथ पर्णता का संबंध होता है, नित्य होता है, उसी तरह जैसे पर्णता की जू होनी चाहिए पलाश की, तो नित्य वहां पर संबंध होता है। उसी तरह जैसे वाक्य प्रमाण से नित्य संबंध होता है, ततः नित्यामतः, इसलिए ये उपासनाएं कर्म में नित्य मानी गई है। सिद्धांति उत्तर देते हैं पृथक फल श्रुते है नयिता नित्या। पृथक पृथक फल का श्रवण होने से ये बताए गए उपासनाएं नित्य नहीं है। कैसे गोदोहनादियों की तरह गोदोहनादि जैसे नित्य नहीं है, वैसे ये उपासनाएं भी नित्य नहीं है। उभौ कुरुत इत्युक्तम कर्मोपासन उपासन।
कर्मोपास्यानुपासिन उभौ कुरुते इत्युक्तम। क्योंकि कर्म उपासी अनुपासिन हो, दोनों को भी बताया कि आप दोनों भी करें, अर्थात ये उपासनाएं नित्य नहीं है। तो देखिए इदानीं भाष्यम संति कर्मांग व्यपाश्रयानि विज्ञानानि वदन्ति कर्मांगाश्रितानि बहूनि विज्ञानानि उपासनानि सन्ति यथा ओम इति एतद् अक्षरम् उद्गीतम् उपासित इति इत्यादि। ओम इति एवं रूपेण एतस्य अक्षरस्य उद्गीतम् ओम इति एतस्य अक्षरस्य उद्गीतम् इति एवं रूपेण उपासनां कुर्यात् तर्हि अत्र कर्मांगाश्रितानि बहूनि उपासनानि सन्ति। किं तानि नित्यानि एव स्युः? कर्मसु वर्णमयत्वादिवत् उत अनित्यानि? कर्मसु वर्णमयत्वादिवत् तानि नित्यानि सन्ति अथवा गोदोहनादिवत् अनित्यानि सन्ति इति विचारं करिष्यामः। इति विचारयामः अर्थात् विचारं करिष्यामः। किं तावत् प्राप्तम्? आदौ किं प्राप्तम्? नित्यानि उपासनानि अनित्यानि वा? तर्हि पूर्वपक्षी वदति नित्यानि इति। एतानि उपासनानि नित्यानि सन्ति। सिद्धान्ते पृच्छति कुतः कस्मात् नित्यानि सन्ति? पूर्वपक्षी वदति प्रयोग वचन परिहारवत् परिग्रहात् प्रयोग वचन परिग्रहात् प्रयोगस्य वचनस्य स्वीकारात् एतानि उपासनानि नित्यानि सन्ति। अनारभ्याधीतानि अपि हि एतानि उद्गीतादिद्वारेण क्रतुसम्बन्धात् क्रतुप्रयोगवचनेन एव अंतर एव अंगान्तरवत् संस्पृश्यन्ते। अनारभ्य धीतानि अपि हितानि उपासनानि अर्थात सामान्य रूपाणि अनारभ्य अर्थात कस्यापि आरंभम अकृत्वा अधीतानि पठितानि एतानि उपासनानि कमपि विषयम् अनारभ्य एतानि उपासनानि पठितानि उद्गीतादि द्वारेण उद्गीत इत्यादि द्वारा क्रतु संबंधात् क्रतुणा सह संबंध भवति। तस्मात् क्रतु प्रयोग वचनेन एव है ना क्रतोः प्रयोगस्य कथनाद् एव अंगान्तरवत् संस्पृश्यन्ते। यथा अन्यस्य अंगस्य संस्पर्श भवति नित्यः तद्वदेव अत्रापि संबंधः भवति। कथा उक्तं यत् स्वेषां यत्तु येषां स्ववाक्येषु फलश्रवणं परन्तु येषां उपासनानां विज्ञानानां स्ववाक्येषु स्वस्य वाक्येषु यत् फलं श्रूयते यथा आपहिता वै कामानां भवति।
कामानां प्रापयिता भवति। आपयिता अर्थात प्रापयिता प्रापणकर्ता अस्ति इत्यादि तद वर्तमानापदेश रूपत्वात् अर्थात वर्तमान कथन रूपत्वात् अर्थवाद मात्रम एव अपाप श्लोक श्रवणादिवत। पश्यन्तु एतत् केवलम् अर्थवाद रूपमेव अस्ति। कथं? यथा अपाप श्लोक श्रवणादिवत, यथा पाप श्लोकस्य श्रवणं न भवति तद्वत्। यथा एक लिखितं यस्य पर्णमयजुहुर्भवति न स पापं श्लोकं शृणोति इत्यत्र यथा एषः श्लोक भामत्याम् अस्ति द्वितीय भङ्ग। यस्य पर्णमयजुहुर्भवति न स पापं श्लोकं शृणोति इत्यत्र यथा न फल प्रधानम अर्थवाद रूपत्वात् फलस्य प्राधान्यं नास्ति तद्वदेव तस्माद् यथा यस्य पर्णमयजुहुर्भवति न स पापं श्लोकं शृणोति। भाष्य है ना। यस्य पुरुषस्य जो कीदृशी भवति पर्णमय अर्थात पलाशस्य स पापं श्लोकं न शृणोति इति ओमादीनाम् अप्रकरण पठितानाम् अपि इत्यादि प्रकरणे पठितानि न सन्ति तर्हि अपि जुवादि द्वारेण क्रतु प्रवेशात् तेषां मंत्राणां जुहुद्वारा यज्ञ प्रवेशः अस्ति प्रकरण पठितवत् नित्यता यथा प्रकरण पठितानाम् अंगानां नित्यता तद्वत् अत्र एवं उद्गीतादि उपासनानामपि नित्यता एव। उद्गीतादि उपासनानामपि कर्म संबंध नित्यः अस्ति इति उक्तम्। एवं प्राप्ते सिद्धान्तिनः वदन्ति ब्रूमः वयं किं तन्निर्धारणा नियमस् तद्दृष्टेः तन्निर्धारणा नियमस्तद्दृष्टेः पृथग्य प्रतिबंध फलम् पृथग्य प्रतिबंध फलम्। देखिए कहते हैं कि तन्निर्धारणा नियम तेषाम् उपासनानाम् अर्थात कर्मांगाश्रितानाम् उपासनानाम् नित्यवद अनुष्ठानस्य नियमः नास्ति। तेषां नित्यतायां नियमः न वर्तते। कस्मात् किमुक्तं तद्दृष्टेः तस्य अनियमस्य दृष्टेः तस्य अनियमस्य दृष्टि वर्तते तस्मात् अनियमः। पुनः उक्तम् ही ज्ञान है न पृथग्य पृथग्य ठीक है सम्यक अस्ति जय अन्यत्र ही यस्मात् कारणात् अप्रतिबंध फलम् अर्थात यदेव विद्या करोति तदेव वीर्यवत्तरं भवति इति एवं रूपेण कर्म समृद्ध्यात्मकं फलम् उपासनायाः वर्तते। यतो यदि उपासना सहितं कर्म कुर्यात् तदा अप्रतिबंधितं फलं प्राप्नोति। उपासना रहितं
कुर्यात् तदा तादृशं फलं न लभते इति प्राप्ते, है ना, ब्रह्मा तन्निर्धारणा नियमः इति यानि एतानि उद्गीतादि कर्माणुगुण कर्म गुण याथात्म्य निर्धारणानि यानि एतानि उद्गीतादि कर्म गुण उद्गीत इत्यादि कर्मणां गुणस्य याथात्म्य यथार्थ स्वरूपस्य निर्धारणानि रसतम आप्ति रसतमस्य प्राप्ति समृद्धि मुख्य प्राणे आदित्य, है ना, रसतमस्य प्राप्ति समृद्धि और मुख्य प्राणे आदित्य प्राण आदित्य इति एवमादिनी नैतानि नित्यवत् कर्मसु नियमेरन्, है ना, एतानि नित्यवत् कर्मसु न नियमेरन् अर्थात यथा नित्य परिणमयजुर् भवति इत्यत्र यथा तेषां नियोगः नित्य भवति अथवा नित्य कर्मवत् एतानि उपासनानि कर्मसु न नियमेरन् अर्थात इनका उसमें नियम नहीं होगा। कुतः? कहते कि क्यों ऐसा? तथा ही अनियतत्वम् एवं जातीयकानां दर्शयति श्रुति तद्वदेव एवं जातीयकानां अर्थात इस जातीय वाले जातीय, है ना, एवं जातीयकानां उपासनानां अनियतत्वं स्वयं श्रुति दर्शयति। कथं दर्शयति? तेन उभौ पुरतः यश्चैतदेवं वेद यश्च न वेद, तेन उभौ कुरुतः, उभौ अर्थात दोनों करते हैं, अर्थात उभौ जनौ उपासनां कुरुतः कौ 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 तौ जनौ उपासनां कुरुतः अथवा यस्य एतद्वेद यह एतत् कर्म जानाति उपासते यश्च न वेद यह न जानाति तौ उभौ अपि उपासनां कुरुतः इति। अथवा यह उपासनां करोति इत्थं कर्तव्यं, यह उपासनां करोति अयमपि एतत् कर्म करोति, यह उपासनां न करोति स अपि कर्म करोति इत्थम् एवम् अर्थस्य तदा उपासनानाम् अनियतत्वं सिद्ध्यति इति अविदोषोऽपि क्रियाभ्यनुज्ञानात् एवं अज्ञानिनापि क्रियायाः स्वीकारः कृतः अर्थात अज्ञानी अपि कर्म करोति ज्ञानी अपि कर्म करोति उपासनावान करोति अनुपासनावान अपि करोति अतः उपासनानां नित्यत्वं नास्ति। अग्रे प्रश्न प्रस्तावादि देवता विज्ञान विहीनानामपि प्रस्तोत्रादीनां याजनाध्यवसान दर्शनात् किमुक्तम्? प्रस्तावादि देवता विज्ञान विहीनानां, यह प्रस्ताव इत्यादि देवतायाः देवतानां विज्ञान रहिताः तेषामपि
प्रस्तोत्रादीनां ये प्रस्तोतारः तेषां प्रस्तोतृ स्तोता इत्यादीनां याजनाद्यवसान दर्शनात् याजनस्य निश्चय दृश्यते तेपि याजनं कुर्वन्ति यदि प्रस्तोतर्या देवता प्रस्तावम् अन्वायत्ता तं चेद विद्वान् प्रस्तोष्यति है ना मूर्धाते व्यपदिश्यत इत्यादि किमुक्तम् हे प्रस्तोतर इदानीम् अहं तस्य ज्ञाता अस्मि अतः या देवता प्रस्तावम् अन्वायत्ता प्रस्ताव भक्तौ या देवता युक्ता अस्ति तां देवतां यदि भवान् न ज्ञास्यति अज्ञात्वा एव प्रस्तावं करिष्यति तर्हि प्रस्तावं भवान् यदि इत्थं करिष्यति तर्हि किं भविष्यति ते मूर्धापति व्यपतिष्यत् तेरा मूर्धा गिर जाएगा ताम चेत अविद्वान उद्वास्यति है ना न अज्ञात्वा उद्वासं क्रियां करोति उद्गास्यति उद्गानं करिष्यति ताम चेत अविद्वान प्रतिहरिष्यसि इति इत्यत्र अर्थात आदौ भवान् प्रस्तावम् इत्यादिकम् अकरोत् किन्तु इदानीं यदि करिष्यति तर्हि तव मूर्धा पतिष्यति अपि च एवं जातीयकस्य कर्म व्यपाश्रयस्य विज्ञानस्य यदा एवं जातीयकम एवं जाति ही यस्य तत् है ना एवं जातीयकम कर्म व्यपाश्रयः कर्मस्य करते कर्मणः कर्मणः आश्रयं यत् ज्ञानं तस्य कर्माश्रयस्य विज्ञानस्य पृथगेव कर्मणः फलम् उपलभ्यते अर्थात विज्ञानस्य पृथक कर्मणः पृथक फलम् उपलभ्यते कर्मफल सिद्ध्य प्रतिबन्धः केवलं कर्मफलस्य सिद्ध्यौ प्रतिबंध न जायते तत् समृद्धि अतिशय विशेष कश्चित तत्समृद्धि सह समृद्धि स उत्कर्षः कश्चित स उत्कर्षः अतिशयवान भवति यदि उपासना सहितं कर्म करोति तथैव उक्तं तेन उभौ कुरुतो एतदेवं वेद यश्च न वेद तेन तस्मात् कारणतेन है ना उभौ कुरुत उभौ अपि जनो कर्म कुरुत य एताम् उपासनां जानाति करोति अथवा न जानाति न करोति नाना तो विद्या च अविद्या च विद्या च अविद्या च नाना नाना अर्थात भिन्ना भिन्ना भिन्नास्ता तर्हि अपि यदेव विद्या करोति विद्या यत् करोति श्रद्धया उपनिषदा विद्या यत् करोति तर्वीर्योत्तरं भवति यत् श्रद्धया विद्या उपनिषदा न करोति तद् वीर्यवत् परं न वीर्यवत् भवति वीर्यवत्तरं न भवति इति तत्र नानात्वितीं विद्वद् अविद्वत् प्रयोगयोः पृथक् करणात् नानात्व इति अनेन विदुषः अविदुषश्च पृथक् पृथक् प्रयोगस्य करणात् वीर्यवत्तरम् इति च तद् अतिशय वीर्यवान् अस्ति वीर्योत्तरम् अस्ति इति च तरप् प्रत्यय प्रयोगात् कस्य प्रत्ययस्य प्रयोगात् तरप् प्रत्ययस्य प्रयोगात् विद्याहीनमपि कर्म वीर्यवत् इति गम्यते
विद्याहीनम उपासनाहीनम कर्म वीर्यवत, उपासना सहितम कर्म वीर्यवत्तरम। तच्च अनित्यत्वे विद्यायाः उपपद्यते। विद्यायाः अनित्यत्वे, विद्या यदि अनित्या स्यात् तदैव वीर्यवत् वीर्यवत्तरत्वं सिद्ध्यति, अन्यथा न। नित्यत्वे तो कथम तद्विहीनं कर्म वीर्यवत् इति अनुज्ञायेत। इति विद्या नित्यास्ति चेत् विद्याविहीनं कर्म इति वक्तुं न शक्यते। विद्याविहीनं कर्म वीर्यवदस्ति इति अनुज्ञा कथं दातुं शक्यते, अर्थात् दातुं न शक्यते। तस्मात् कारणात् विद्या अनित्या एव अस्ति इति वक्तव्यम्। सर्वांगोपसंहारे हि वीर्यवत् कर्म इति स्थितिः। सर्वांगोपसंहारे अर्थात् सर्वेषां अंगानां अत्र कर्मणि उपसंहारः क्रियते चेत् कर्म वीर्यवत् भवति, बलवत् भवति इति स्थितिः। तथा लोकसामादिषु प्रतिनियतानि प्रत्युपासनां फलानि शिष्यन्ते। वदन्ति लोके सामित्यादिषु प्रतिनियतानि, सर्व प्रत्येकं नियतानि प्रत्युपासनम, प्रत्यय प्रत्युपासनायां, प्रत्युपासनायां हाँ फलानि शिष्यन्ते। किं प्रत्युपासनायां न भविष्यति, प्रत्युपासने फलानि शिष्यन्ते उपदिश्यन्ते। कल्पन्ते ह्यास्मै लोका ऊर्ध्वाश्चावृताश्च, ऊर्ध्वाः आवृताः लोकाः अस्मै कल्पन्ते। ऊर्ध्वये आवरणरहिताः लोकाः एतस्य कृते कल्पन्ते, एतस्य कृते कल्पनां क्रियते। अत्र वदन्ति पश्यन्तु, न च इदं फलश्रवणम् अर्थवादमात्रं युक्तं प्रतिपत्तुम्। इदं फलश्रवणम्, अत्र यत् फलं श्रूयते तत् तस्य फलस्य श्रवणम् अर्थवादमात्रम् इति ज्ञातुं प्रतिपत्तुम्, अर्थात् ज्ञातुं न शक्यते। तथा हि गुणवादः आपद्यते, तद्वत् गुणवादस्य प्राप्तिः स्यात्। फलोपदेशे तु मुख्यवादोपपत्ति, फलस्य उपदेशे कृते मुख्यवादस्य सिद्धिः स्यात्। ठीक ना। प्रयाजादिषु तु इति कर्तव्यताकांक्षस्य कृतोः। प्रयाज इत्यादिषु इति कर्तव्यता आकांक्षा युक्तस्य क्रतोः प्रकृतत्वात्। प्रकृत का से इति कर्तव्य आकांक्षितः क्रतु, तादर्थे सति यह प्रयाग इत्यादि उस क्रतु के लिए होते हुए युक्तम फलश्रुते अर्थवादत्वम्, तत्र फलश्रवणस्य अर्थवादता योग्या। परंतु तथा अनारभ्यदितेषु अपि परिणमयत्वादिषु, जो अनारभ्यदित किसी का आरंभ न करके इसका पाठ किया हुआ है, ऐसे अनारभ्य विधि में परिणमयत्व इत्यादिषु नहीं परिणमयत्वादीनाम् अक्रियात्मकानाम् आश्रयम् अंतरेण फल संबंधो वकल्पते। किमुक्तम्? परिणमयत्वादीनाम् अक्रियात्मकानाम्, परिणमयत्वादि दयादीनि यथा अक्रियात्मकानि, तेषां क्रियारहितानि, तेषाम् आश्रयमर्थानेन कस्यचित्
आश्रय स्यात् तदा एव फलेन सह संबंधः भवति। आश्रय विना फलेन संबंधः न भवति। अतः आश्रय फल संबंधः न अवकल्पते। फल संबंध से कल्पना न क्रियते। गोदा दोहनादीनां हि गोदोहन इत्यादिष्वपि प्रकृताप्रणयनादि आश्रय लाभ। गोदोह इत्यादि के भी प्रकृत अप्रणयन इत्यादि के आश्रय का लाभ होने से उपपन्न फल विधि क्या उपपन्न हो गया, सिद्ध हो गया, फल विधि सिद्ध है। तथा बैलवादी नाम भी तद्वत् बिल्व इत्यादि नाम भी प्रकृत यूपाद्याश्रय लाभात उपपन्न फल विधि। बिल्व इत्यादि होता है ना, उसमें प्रकृति उपाधि के आश्रित लाभ होने से फल विधि उपपन्न फल विधि सिद्ध हो जाती है। न तो परिणमयत्वादिषु एवं विधम कश्चिद आश्रय प्रकट अस्ति। परिणमयत्वादियों में इस प्रकार का आश्रय है ना, प्रकृति उपाधि आश्रय के लाभ से कुछ सिद्ध न भवति। उत्तरम पश्यन्तु पंक्तयादौ न तो परिणमयत्वादिषु एवं विध कश्चिद प्रकृतः आश्रयो अस्ति। यदा यस्य परिणमयी जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम शृणोति। इत्यत्र परिणमयी जुहुर्भवति इत्यत्र एवं विध एवं प्रकारकः अर्थात यूपादि तुल्य यूपादि तुल्य कश्चिद कस्यापि आश्रयस्य लाभ न भवति। माने जैसे परिणमयत्वादियों में आश्रय का कोई भी लाभ नहीं है। वाक्य नहीं वो तू जो वाद्याश्रयतम विवक्षित्वा, वाक्य द्वारा एवं जो इत्यादि आश्रयता की विवक्षा करके फलेपि विधिम विवक्षतो, फलेपि विधिम वक्तुम इच्छितः पुरुषस्य वाक्य भेद स्यात्। अब दोनों में विधि मानी तो जो क्या आश्रयता में और फल में दो जगह पर विधि मानी तो वाक्य भेद हो जाए। उपास इसलिए यहाँ पर दो नहीं मानते, एक ही मानते। उपासना नाम तो क्रियात्मकत्वात्, यहाँ उपासना संति क्रियात्मकः क्रियारूपः। विशिष्ट विधानोपपत्तेः विशिष्टस्य विधानस्य सिद्धेः उद्गीतादि आश्रयाणां फले विधानं न विरुध्यते। उद्गीतादि आश्रयाणां कर्मणां फले विधानं फले विधानस्य विरोधः न भवति। तस्मात् यथा कृत्वाश्रयाणि गोदोहनानि, यस्मात् कारणात् कृत्वाश्रय भूतानि गोदोहन इत्यादीनि सन्ति। गोदोहन इत्यादि क्रतु की आश्रय रूप है। फल संयोगात् अनित्यानि, फलस्य संयोगात् कीदृशी सन्ति, अनित्यानि सन्ति। एवं उद्गीतादि उपासनानि अपि
अनित्यानि हितमेव इत्यादि उपासनानि अपि अनित्यानि सन्ति एवं द्रष्टव्यम अतएव च कल्पसूत्रकाराः इसलिए कल्पसूत्रकार कहते हैं न एवं जातीय कानि उपासनानि कर्तेषु कल्पयान चक्रु हम इस प्रकार की उपासनाओं को कर्तव्यों में कल्पना नहीं करेंगे ये बताया इत्येतस्य तात्पर्यं शृण्वन्तु छांदोग्य उपनिषदि बहुनि कर्माणि सन्ति बहुनि उपासनानि सन्ति तत्र अयं संदेहः कर्मसु उपासनानां नित्यत्वेन अनुष्ठानः भवेत् अथवा न भवेत् अरे यथा काट्यते सर्वं वसतु अधिकं इत्थं चिन्तामुद्रां करिष्यति कदापि चिन्तामुद्रा न बहिर्निग्रहस्य चिन्तामुद्रा सरलतया सन्ध्यां कुर्वन्ति भवन्तः करोति वा सन्ध्यां करोति सन्ध्यां कुर्वन् काले करोति जलमितस्ततः क्षिपति एतत् किमस्ति सन्ध्या कर्म वर्तते तर्हि सन्ध्या कर्म अस्ति तत्र तत्रैव इदानीं ध्यानम् आगच्छति है न सा उपासना आदौ तु सर्वत्र कर्म कृतं तदनन्तरं ध्यानं कुर्मः तत् का उपासना जपं कुर्मः का अस्ति उपासना तर्हि यदि ध्यानात्मक उपासना अथ च कर एतत् ध्यानात्मक उपासनायाः नित्यत्वेन कर्मणा सह समन्वयः अस्ति अर्थात नित्यत्वेन कर्मणि उपासना कर्तव्या अथवा न कर्तव्या न ज्ञातम मनुष्य से क्या बोला कीर्तन कर दिया कीर्तन करने के लिए चला जाता है अब समझो कथा बता रहा है यह कर्म है और बीच में विट्ठल विट्ठल करना ही चाहिए कि नहीं करना चाहिए इतना समझ में आता है तो कोई बोलेगा नहीं नहीं नित्य करना चाहिए विट्ठल विट्ठल कोई बोलता कोई नियम नहीं है खुद को भी करना है कोई बाद में करना उसकी इच्छा वैसे कर्मों में उपासना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए अब गायत्री करेंगे अब जब का गायत्री जा रहा है संध्या करने जा रहे हैं तो उसमें हम ध्यान करें कि न करें हाँ पूर्व पक्ष बोलना नित्य करना चाहिए वहां तो करना ही चाहिए लेकिन सिद्धांति कहेगा नित्य नहीं करना चाहिए जिसको ज्यादा फल चाहिए वो करे ज्यादा जिसको ज्यादा नहीं चाहिए वो मत करे वैसे ही इस कर्मों में उपासनाएं नित्य रूप से करनी है कि जब चाहे करो न जब चाहे तब चाहे ना करो तो सिद्धांत बोलता है अरे जब चाहे करो अथवा न करो कोई नियम नहीं है पूर्व पक्ष को मानना है कि नित्य करनी चाहिए सिद्धांत मानना है कि करो अथवा न करो कोई समस्या नहीं यही बताया इसी के लिए इसके उदाहरण दिए और कोई पूर्णमदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते